and share my screen. Okay, I hope my screen is visible. Yeah, I think it is. All right. So yeah, first we'll take one simple example. Okay, we'll start here from scratch. So it's just a template that we have over here. I'll just quickly open this example. Okay, this is the example that okay. There's nothing here. It's just displaying, like if I display hello, it just displays hello. Okay. So first, let's define the objective. Okay, what are we going to do over here? We'll define that part. Okay. All right. So what I want to do is in here, I want to pass some information from parent component to child component. Okay, some information I want to pass from parent component to child component. Okay, so app is our parent component. Let's create one child component. I can name it anything. For the time being, let me call it child component only. Okay, for ease of understanding, I'll start calling it parent component instead of app. Okay, I'll render parent component now. So we have child component and let's just say child component and it returns an h1 which has child in it. Okay. All right. So in parent component, I'll just call it h1 parent and I'll have that child component passed. And yeah, there you go. It also renders the child component. Whatever is being rendered in child component, that is also being displayed. If I want to pass some information from parent component to child component, information means it could be anything, any data that I want to pass, data, information, whatever you want to call. Okay. So let's say I want to pass some name or something. Okay. Let's say name we are passing here called John. Okay. Now, if I have to pass that information, I'll just say let name equal to name. So the key is name, object mein value is also name, and it gets passed here as props. Correct? So let's increase size a little bit. Let me move it a little bit. हाँ, यहाँ से शुरू है ना? Let's keep it this way. तो एक parent component है, child component है. Parent component से I am passing some information to child component. And यहाँ से retrieve करेंगे हम लोग information. We'll retrieve that same information from here. ठीक है? So if I do that, click on inspect and let's say, yes, let's keep it this way. So any information that you pass in from parent to child, props, whatever you want to call it. If I call it blah, can retrieve it blah, but it doesn't make sense, right? But you understand it. It's just a parameter, right? So you can name it whatever you want. I named it props. So it's an object which has a key and a value, name John. And I can use it over here. Like if I want to, let's say props.name karunga, so I'll be able to even use that. So this is how you pass information from parent component to child component, right? So if I open this notes, let's open this notes and keep it here also. And let's increase. Yeah, and this should suffice. So if I scroll down, the first part of this, right? This diagram, parent, child component. So if I have to pass any information from parent to child, I'll just pass as a prop. I'll retrieve that prop or property and I can utilize it. Is this part and is this diagram clear? Do you understand what's happening here? Everybody? We're doing this from like 1 or 2 days. Very simple, very basic type of information passing. Parent component है, child component है.
पेरेंट कंपोनेंट से कुछ इंफॉर्मेशन हमको चाइल्ड कंपोनेंट में पास करना था, तो यू डायरेक्टली पास इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट एज अ प्रॉप। आप रिट्रीव करोगे, आप यूटिलाइज करोगे, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। ओके, all right, let's take one more example now. Okay, I'll again call it parent component. Okay, I'll stop this, and ये एग्जाम्पल 2 हो गया। ओके, और इसको क्लियरली लेट्स कॉल चाइल्ड टू पेरेंट ऐसे करके लिख देते हैं, एंड लेट्स open it with live server. Okay, there you go, you have just that parent component. Okay, so if I display parent, I can see that. If I display child, okay, so here is my child component again. All right, अभी agenda क्या है? Okay, now my second agenda is to pass some information from child component to parent component. मेरे को ना इंफॉर्मेशन यहां से चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट को कुछ इंफॉर्मेशन भेजना है। ओके, एजेंडा इज क्लियर, हम क्या करना चाहते हैं, दैट्स द एजेंडा, राइट? सो व्हाट डू आई वांट टू डू, आई वांट टू एक्सप्लोर एन एग्जांपल वेर इन मेरे को अगर इंफॉर्मेशन चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट को भेजना है, हाउ डू आई डू दैट? ओके, तो हमने जो सीखा था यहाँ पे कि प्रॉप की तरह पास कर सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ रह गया, लेट्स से कुछ इंफॉर्मेशन, ओके, वही नेम इक्वल टू जॉन, अब मैं ये कहा, इफ आई वांट टू पास दिस इंफॉर्मेशन टू पेरेंट कंपोनेंट, हाउ डू आई पास इट? डू आई हैव एक्सेस टू पेरेंट कंपोनेंट यहाँ पे? नो, नहीं है, राइट? डू यू सी एनी वे, क्या कोई तरीका आपके दिमाग में आ रहा है जिससे आई कैन सेंड दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम चाइल्ड कंपोनेंट टू पेरेंट कंपोनेंट? पेरेंट इनसाइड चाइल्ड, दैट्स एंटी पैटर्न। अब पेरेंट आप इसीलिए बुलाते हो कि वो पेरेंट के पेट में चाइल्ड हो सकता है, चाइल्ड के पेट में पेरेंट हो सकता है, डज इट वर्क दैट वे? थिंक अबाउट इट, रियल लाइफ में भी दैट्स हाउ इट इज, राइट? सो यू कैन हैव child inside parent, how would you write parent inside child? That doesn't work, it doesn't work that way, right? So the data flow हमेशा यहां से child component को जाएगा, ठीक है। now इसके लिए you need to understand two things, okay? what all you can pass as properties, क्या क्या इन्फॉर्म डेटा टाइप्स आप पास कर सकते हो एज प्रॉपर्टीज? डेटा टाइप्स दैट यू कैन पास एज प्रॉपर्टीज और प्रॉप्स, स्ट्रिंग पास कर सकते हो, नंबर पास कर सकते हो, यस, बुलियन पास कर सकते हो, यस, एरे ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो, यस, आप एक फंक्शन भी पास कर सकते हो एज अ डेटा टाइप, यू नो, यू कैन पास अ फंक्शन एज वेल फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। ओके, ठीक है, सिंपल थिंग अबाउट फंक्शन, ओके, नथिंग रिलेटेड टू रिएक्ट, बेसिक फंक्शंस के बारे में समझते हैं। All right, so here I'll pass some parameter a,
a into something math dot random something we wrote. Okay, so we wrote a function, and this function takes one parameter a. Okay, and it just multiplies it with math dot random and just returns. Okay, this function is declared. It's called function declaration, right? जब हम function declare करते हैं, do we need to pass the value of a? My question is very simple. It's JavaScript question only. When I declare this function foo, जब मैं ये function declare करता हूँ, तो मेरे को ये a क्या है exactly? Do I need to know that? No. Some people say yes, but no, I just pass the placeholder value, right? ये पैरामीटर क्या है? एक placeholder value है. हम बोल रहे हैं कि फ्यूचर में जब इन्वोक करेंगे ये फंक्शन, तब हम इसका एग्जैक्ट वैल्यू पास करेंगे. तब तक के लिए प्लेस होल्डर ए रख लेना यहाँ पे. करेक्ट? दैट्स व्हाट अ पैरामीटर इज, राइट? तो व्हेन आई इन्वोक इट, आई नीड टू एग्जैक्टली पास दैट वैल्यू. करेक्ट? जब मैं इन्वोक करूंगा तब मेरे को वैल्यू पास करना है. ऑल राइट, ठीक है. नाउ दैट कंसेप्ट इज क्लियर. यहाँ पे आते हैं. मैं यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर करूंगा वैसी उसी तरह. ओके, एंड आई कॉल दिस फंक्शन गेट नेम. ओके, तो पेरेंट में somehow I'll get this name and print it. Do I need to know what name is when I declare this? When I'm declaring this function, do I need to know exactly what is the value of name? Question. जब मैं ये फंक्शन डिक्लेयर कर रहा हूं तो मुझे इसका वैल्यू नहीं पता, राइट? आई डोंट नीड टू नो एग्जैक्टली. जब हमने ये फंक्शन डिक्लेयर किया था यहाँ पे, तब मेरे को ए का वैल्यू नहीं पता था. एंड दैट्स ओके. व्हेन यू आर डिक्लेयरिंग, यू डोंट नीड टू नो एग्जैक्टली, बट व्हेन यू इन्वोक यू नीड टू नो द एग्जैक्ट वैल्यू, राइट? So here I am declaring this function and saying कि फ्यूचर में जब ये इन्वोक होगा फंक्शन, तब हम ये नेम पास कर देंगे. देन यू कैन प्रिंट इट. whenever it gets called, we'll pass that argument. नेम जो भी होगा वैल्यू विल पास दैट एंड यू कैन एक्सेस इट देन. ठीक है, ये फंक्शन मैंने डिक्लेयर किया एंड आई एम पासिंग दैट फंक्शन. key is get name, value is also get name. I'm passing that information. ये कुछ इस तरह जाएगा ना. सो इफ यू थिंक ऑफ इट, इंटरनली कुछ इस तरह दिखेगा, राइट? लेट्स से आप इसको क्लियरली अगर समझना चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हो. ठीक है, चाइल्ड इन्वोक हो रहा है जिसमें हम एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं जिसमें गेट नेम फंक्शन की गेट नेम वैल्यू इज दिस फंक्शन गेट नेम जो पास हो रहा है. एक फंक्शन हम लोग ऐसे पास कर रहे हैं. एवरीबडी विथ मी ऑन दिस? सिंटैक्स चेंज है बट यही है, राइट? तो ये फंक्शन गेट नेम हम पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में पास कर रहे हैं. तो यहाँ पे प्रॉप्स अगर मैं लिखूंगा तो क्या मैं वो फंक्शन एक्सेस कर पाऊंगा? एंड द आंसर इज यस. देखो वही ऑब्जेक्ट आ गया जो हम बोल रहे थे. इज द सेम ऑब्जेक्ट and I'm able to access that get name function. So if I do props dot get name, I'll have access to this function get name, right? So now instead of console logging it, if I do props dot get name, and if I pass that name function here, in parent component, I have access. So in parent component, I have access to this name now. Because I passed a callback function and I invoked it in child component, and यहाँ पे जब ये invoke कर रहा हूँ, then I pass the value. So I have access to this and I'm able to use it.
Okay, so we put get name is a function, right? That you are passing here. The one that I am highlighting. This is the function that we have passed. So prop name, I've given it same so that it's easier to understand, right? So I can write it the same way, props dot get name करके. If you feel you want to write some other name, then props dot function name. So basically you will write props dot function name like this. But again, it will create confusion. So you just write get name, pass that value, and here you will just get access to that get name, then you use it. Okay. So this way you can have access to items in child element from parent component. Like अगर मेरे को parent component में कुछ value चाहिए from child component, I have to pass a callback function and then I can retrieve it. तो अगर आप जावास्क्रिप्ट में भी एग्जांपल ले लोगे तो can create a simple function foo, okay, or you can even call it parent function, whatever you want to call it. Okay, so here let's say you want to retrieve, so let's say we'll have one more function here, bar say some information, some value, or bar has some value, let's call it math.random or something. Okay, and now I want to pass this values to this function. Okay, so how do I do that? So here I'll just say so इसी तरह same, let's just write this first. So here from bar function से कुछ वैल्यू अपने को रिट्रीव करना है. So बार वैल्यू यहाँ पे कुछ वैल्यू होगा. ओके, इसको लेट्स कॉल इट सम वैल्यू. Again, I want to pass this information. So what I'll do is I'll create a callback function and I'll get that value here. I'll just say in foo function, we got the value from bar function, and we'll just show that value here. Okay, how we were able to retrieve, we'll just show that. Now, what I'll do is here मैं वो bar function invoke करूंगा and उसमें ये callback function I'll pass in. तो bar function takes a callback function, okay, cv, and यहाँ पे callback function वो invoke करूंगा and I'll pass that value, some value. In order to see if it is the same value or not, I'll just console log in bar value is, and you'll see that it's the same value that gets passed. Okay, so let's say we here example 5 and node temp.js. Oh, I haven't invoked it, so I need to invoke it, right? Oh, so if I invoke it, do you see it's the same value? Let me close it and show 0.88262, and you're able to get that same value in foo from bar component. Is it so confusing? Because you haven't got into depths of functions. It's just that आपको ना थोड़ा सा functions में you need to get a hang of it. But see, कुछ नहीं है यहाँ पे. foo नाम का एक function we have declared, we are invoking it.
तो इस पे वी हैव अ कॉल बैक फंक्शन एंड व्हाई डिड वी राइट इट टू गेट द वैल्यू फ्रॉम बार. अगर even if you don't understand it, let's keep it very simple. This is again additional things I wanted to explain, so I did it, but it's not mandatory. You don't need that. Here you understand very simple thing. I'll tell you in the easiest way possible. Okay, stick to that at least. That is for people who wants to understand it in a depth. तो ठीक है, let's keep it very simple. Parent component, you have parent component, you have child component. Okay, let's say if I annotate, let me give that annotation. Huh. So I got this. So you have parent and you have child component. Okay. And if I want to, oops, let's say parent to child, this is how you would write. And you want to get information from child component to parent component. Okay. So how do you get it? अगर कुछ information है here, you want to get it in parent component. So you create a callback function here, parent में. So this is that callback function that we have created, get name करके, right? And I pass that callback function and I invoke it in child component. जब मैं invoke करूंगा तो वो value pass कर दूंगा. तो here I'll have access to it. As simple as that. This is declared here function. Invocation is happening over here. जब ये invoke होगा तब उसका actual value pass हो जाएगा, तो आप यहाँ पे retrieve कर पाओगे. Okay. All right. Let's do one thing. Here, there's a small example. Okay. Why don't you give it a try from your end? Okay. आप भी एक बार try करो. Give it a try from your end and see if you are able to understand it. Okay. Do this example, the one which is given in the notes. Don't copy paste it. Do it. Then explain it to me. What is the confusion that you have? I'll clear it out. Basically, we spoke two ways in which you can pass information. पहले में you were passing information from parent component to child component. एक है parent component हमारा, and if I draw it over here, so actually वो diagram we have it already. So let's just copy this. So you have parent child component. If you want to pass some information parent में क्या क्या है हमारे पास available? यहाँ पे we had this information name John. हम वो name child component में pass कर रहे थे, तो you just passed it in the and you are able to retrieve it in child component. ये तो अब सबको clear था, right? Only thing is that you got confused with the second part. Now let's take the second part again. Copy image and let's put it side by side. Okay. तो now यहाँ पे parent component में we don't have the value. We want to get some value. Child component में जो value है John करके, we want to get it in the parent component. Okay. So parent component में you don't have the value. Okay. इसको हम ये वाला हमने जो example use किया है वो use करके will explain. ये आप ना as try करना अपने end से. तो मैं बताता हूँ. ये रहा अपना parent component और ये रहा child component. Okay. Parent component, child component. Now parent component में क्या क्या है? I don't have the value at all. बस एक get नाम का फंक्शन हमने डिक्लेयर कर लिया.
ओके, ठीक है। चाइल्ड कंपोनेंट में अपने पास वो नेम वैल्यू है, राइट। सी, वो नेम वैल्यू कहाँ पे है? चाइल्ड पे है। मेरे को यहाँ पे एक्सेस चाहिए। आई वॉन्ट टू नो नेम हियर। मेरे को इधर एक्सेस चाहिए। आई वॉन्ट टू नो, लाइक आई वॉन्ट टू गेट एक्सेस टू नेम हियर। इज दैट पार्ट क्लियर? इतना समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? मेरे को पेरेंट कंपोनेंट में नेम वैल्यू चाहिए। इंफॉर्मेशन चाइल्ड कंपोनेंट में है, मेरे को पेरेंट कंपोनेंट में चाहिए। ओके, ऑल राइट। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है। सॉल्यूशन क्या है विल डिस्कस, बट प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है। डज एवरीवन गॉट दिस पार्ट? आई नीड एक्सेस टू नेम हियर। वो जो नेम है, आई नीड एक्सेस हियर इन द पेरेंट कंपोनेंट। ऑल राइट। So now that you've got the problem, let's try to understand the solution. How do I get the solution? ये समझते हैं, ओके, ठीक है। ये get name जो फंक्शन डिक्लेयर्ड है, ओके, आई डिक्लेयर्ड अ फंक्शन। डू आई नीड टू नो व्हाट नेम इज? जब मैं ये डिक्लेयर कर रहा हूं तो ये नेम इज पैरामीटर, राइट। पैरामीटर कैन बी ए बी सी, कुछ भी लिख सकते हो, एक प्लेस होल्डर की तरह एक्ट करेगा। सो व्हेन आई डिक्लेयर इट, आई डोंट नीड टू नो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दैट, but when I invoke it, I need to know. Correct? Yes or no? All right. So एक सेकंड के लिए forget react at all, okay? बेसिक जावास्क्रिप्ट में ही आप हम समझने की कोशिश करेंगे, ओके। एक फंक्शन है जिसका नाम हमने पेरेंट रख दिया, एक फंक्शन है जिसका नाम हमने चाइल्ड रख दिया, ओके। ऑल राइट। तो पेरेंट नाम का जो फंक्शन है हमने क्रिएट किया, वहां पे मेरे को एक वैल्यू चाहिए विच एग्जिस्ट इन चाइल्ड फंक्शन, ओके। जहां भी बार है, आई जस्ट चेंज इट टू चाइल्ड, ठीक है। पेरेंट कंपोनेंट में आई वांट टू गेट अ वैल्यू फ्रॉम चाइल्ड फंक्शन। अब एवरीबडी नोस जावास्क्रिप्ट एटलीस्ट, राइट। तो इफ आई वांट टू गेट सम वैल्यू फ्रॉम चाइल्ड फंक्शन इन पेरेंट हियर, ये जो सम वैल्यू है, और इसको ना ये लिख देते हैं, कुछ वैल्यू ही लिख देते हैं, ओके। सम वैल्यू की जगह इसको कुछ एक्चुअल वैल्यू लिख देते हैं। बैंक बैलेंस, ओके। मेरे को ये बैंक बैलेंस, ओके, ये जो बैंक बैलेंस है, आई वांट इट इन पेरेंट। चाइल्ड का जो बैंक बैलेंस है, आई वांट टू सी इट इन पेरेंट कंपोनेंट, ओके, ठीक है। सो नाउ पेरेंट कंपोनेंट में आई डू नॉट हैव एक्सेस टू बैंक बैलेंस, बट आई वांट एक्सेस टू दैट। So how do I get it? Okay, I want to get some value. I want to get bank balance value from child function here. इतना सा क्वेश्चन है। चाइल्ड फंक्शन में जो वेरिएबल है बैंक बैलेंस, उसका वैल्यू मेरे को पेरेंट फंक्शन में बताना है। तो I do not have access to it. So what do I do is I write a callback function and I tell के some value in foo function, okay, और foo की जगह अभी in parent function we got the bank balance value from child function and it is, एंड जो भी वैल्यू पास हुआ ये कॉल बैक फंक्शन में विल गेट इट। जब मैं ये फंक्शन डिक्लेयर कर रहा था, डू आई नीड टू नो द वैल्यू? व्हेन आई वाज डिक्लेयरिंग दिस फंक्शन, cv फंक्शन करके वो जो डिक्लेयर किया है, आई डोंट नीड टू नो एग्जैक्टली व्हाट दैट इज, राइट। आई हैव डिक्लेयर्ड द फंक्शन, व्हेन आई इन्वोक इट आई नीड टू पास इट। तो चाइल्ड फंक्शन
ये जो चाइल्ड फंक्शन है इन्वोक्ड हियर एंड आई पास दिस कॉल बैक फंक्शन, मैंने ये कॉल बैक फंक्शन इसमें पास कर दिया। ठीक है, तो चाइल्ड फंक्शन में ये जो कॉल बैक फंक्शन है यहाँ पे इन्वोक होगा। जब ये इन्वोक होगा वी आर पासिंग द बैंक बैलेंस। So I am able to retrieve the value from child function in parent function in this way. By using callback functions, you can access the values from child function. It's as simple as that. CB callback function है. CB is callback function. तो यही कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं, वेयर इन we have parent component, we have child component, and in parent component we want to access some value from child component। ये जो name है हम parent component में access करना चाहते हैं। I do not have direct access to it, तो मैंने क्या किया, मैंने एक callback function बनाया, वो callback function यहाँ पे भेज दिया props की तरह, उसको यहाँ पे retrieve किया and उसमें वो value पास कर दिया, so that when the function is invoked, जब ये function invoke होगा तब मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। एज सिंपल एज दैट। या फाइनली आई सी गॉट इट। ओके ग्रेट। सो दिस इज हाउ यू रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम चाइल्ड कंपोनेंट इन पेरेंट कंपोनेंट में। ओके ये इंपॉर्टेंट है, डेटा कैसे फ्लो होता है बिटवीन कंपोनेंट्स, ये समझ में आ गया तो रिएक्ट में आप बाकी सारी चीजें भी ऑटोमेटिकली समझ आने लगेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ही समझ नहीं आया तो डजेंट मैटर, अगर आगे भी डिस्कस करूंगा तो इट विल हैव एन इम्पैक्ट। सो ये समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ऑलराइट, इसको यहाँ पे उस तरह ड्रॉ करके बताया गया है कि चाइल्ड टू पेरेंट, अगर कुछ इंफॉर्मेशन आपको भेजना है चाइल्ड से पेरेंट पे, तो आप उसको एक कॉलबैक फंक्शन की तरह पास कर दो एंड आर्ग्यूमेंट जब इन्वोक करोगे तब आर्ग्यूमेंट की तरह पास कर दोगे तो वो पेरेंट फंक्शन में मिल जाएगा अपने को। ठीक है, आई होप दिस इज अंडरस्टूड। ओके, एक और लास्ट सिनेरियो देख लेते हैं। ओके ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। ओके, व्हाट इफ आई हैव टू चाइल्ड। ओके, एक है चाइल्ड वन कंपोनेंट, ये ऑलरेडी लाइक जो अपने हम दोनों ने हमने जो अब तक सीखा है, अगर वो समझ में आ गया तो ये उसी का एक्सटेंशन है, इसमें कुछ नया नहीं सीख रहे हैं हम लोग। बेसिकली चाइल्ड वन करके यहाँ पे लिख दिया, लेट्स से एक एग्जाम्पल, एडिशनल एग्जाम्पल समझ लेना इसको। ये रहा चाइल्ड वन, ये रहा चाइल्ड टू। ओके सो वील शो ऑल्सो ये, लेट्स ओपन दिस वन। ओके ये रहा चाइल्ड वन, ये रहा चाइल्ड टू कंपोनेंट, दोनों को लाइक चाइल्ड टू भी यहाँ पे रख लेते हैं, चाइल्ड वन चाइल्ड टू। ठीक है, ये ऐप को हम लोग पेरेंट कंपोनेंट बुलाना शुरू करेंगे फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ओके, एक पेरेंट है, दो बच्चे हैं अब। ओके, चाइल्ड वन चाइल्ड टू, टू कंपोनेंट्स वी हैव एज चाइल्ड कंपोनेंट टू पेरेंट कंपोनेंट। ओके ठीक है, नाउ एजेंडा लिख लेते हैं फिर से। ओके विल राइट द एजेंडा। पास some information from child 1 to child 2। चाइल्ड वन से चाइल्ड टू को कुछ इंफॉर्मेशन पास करना है। एक चाइल्ड वन कंपोनेंट से चाइल्ड टू कंपोनेंट को आई हैव टू पास सम इंफॉर्मेशन। सिबलिंग्स है बेसिकली, यस सिबलिंग कंपोनेंट्स है, आई हैव टू पास सम इंफॉर्मेशन। चाइल्ड वन में कुछ इंफॉर्मेशन है, लेट्स से ओके यहाँ पे लिख लिया वो इंफॉर्मेशन बेसिक सा, लेट नेम इक्वल टू जॉन। अब ये इंफॉर्मेशन मेरे को चाइल्ड वन से चाइल्ड टू में पास करना है। ठीक है, हाउ टू डू दिस, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको?
गिव कॉल बैक टू चाइल्ड टू। अच्छा, कैसे? हाउ विल यू? ठीक है, अगर मैं वो एग्जांपल यूज करके गेट नेम यहाँ पे लिख भी लूंगा। अच्छा ठीक है, यहाँ से चाइल्ड टू में मैं लिख भी लूंगा गेट नेम करके। ठीक है, एंड लेट्स से वो नेम यहाँ पे पास भी हो जाएगा, एंड विल बी एबल टू we were able to retrieve value in child 2, नेम वैल्यू इन चाइल्ड 2, एंड वो नेम बता देंगे हम लोग। आपने तो यही बोला था राइट, कि ऐसे लिख लेते हैं, देन विल बी एबल टू। बट ये कॉल बैक है, ये कहाँ पास करोगे? पास कैसे करोगे? क्या आप पास कर पाओगे अभी? अच्छा ठीक है, किसी ने बोला कि चाइल्ड वन में ही ये लिख दो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा, बट हाउ डू आई पास दिस टू चाइल्ड टू? दोनों साइड बाय साइड है ना, तो आप समझिए यहाँ पे क्या कहते हैं, वो क्रोनोलॉजी समझिए। यहाँ पे यू हैव पेरेंट, ओके, देन यू हैव चाइल्ड वन, चाइल्ड टू, ओके। तो ये दोनों साइड बाय साइड है, चाइल्ड वन एंड चाइल्ड टू। इंफॉर्मेशन कैसे पास करोगे? इट्स नॉट इन द पेरेंट, अभी पेरेंट नहीं है राइट। कॉल बैक इन पेरेंट टू एक्सेस चाइल्ड वन, देन पास पेरेंट इन चाइल्ड टू। नहीं, सिंपल सा सोल्यूशन, ओके, बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है, मैं बस समझाता हूँ भी फिलहाल के लिए। विल कम बैक टू दिस। ठीक है, द आंसर टू दिस इज, ये आप कर ही नहीं पाओगे, दिस इज नॉट वैलिड। आप चाइल्ड वन में रख के चाइल्ड टू पे एक्सेस नहीं कर सकते, आप चाइल्ड टू पे कोई वैल्यू रख के चाइल्ड वन पे एक्सेस ही नहीं कर सकते। रिएक्ट में अगर आप ये कर ही नहीं सकते, इसको सिंपल से समझ लेना। अगर हम लोग ये डायग्राम देखेंगे, कि अभी जो हमने ड्रॉ किया था ये मैंने निकाल दिया, बट ठीक है। सो डेटा कभी भी इस तरह फ्लो होता है। अगर आपने ऑब्जर्व किया तो पेरेंट से चाइल्ड को इंफॉर्मेशन लाइक डेटा ऊपर से नीचे जाता है, जैसे ग्रेविटी वर्क करती है राइट। राइट, पानी ऊपर से नीचे गिरता है, नीचे से ऊपर पानी नहीं जाता राइट, अनलेस फोर्स इज अप्लाइड। बट ठीक, सी, डेटा फ्लोस इन दिस वे, पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू पेरेंट नहीं होता। तो कभी अभी अगर आपके पास चाइल्ड टू चाइल्ड है, मतलब दो सिबलिंग कंपोनेंट्स है, मतलब एक और भी चाइल्ड आ गया, चाइल्ड वन हो गया, चाइल्ड टू हो गया। ठीक, इसको चाइल्ड वन बुला लेते हैं, इसको चाइल्ड टू बुलाते हैं। तो से ये दोनों इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते अपने आप में, दे के नॉट शेयर इंफॉर्मेशन डायरेक्टली विद इन देमसेल्व्स। वो इंपॉर्टेंट है समझना। देन अगर मेरे को कुछ कॉमन इंफॉर्मेशन इन दोनों में भी चाहिए, तो मैं कैसे शेयर करूं? ये बेसिकली आपके भाई बहन जैसे ही हैं, दे के नॉट शेयर एनीथिंग, इवन फूड, चॉकलेट, एनीथिंग, लड़ाई करते रहते हैं। तो दिस टू कंपोनेंट्स एट सिबलिंग लेवल्स, दे कैन नॉट शेयर प्रॉपर्टीज डायरेक्टली विद इन देमसेल्फ, वो लड़ाई झगड़ा ही करते रहेंगे। सो द सॉल्यूशन इज, इनको दो ही मत। इंस्टेड अगर कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करना है, तो पुट इट हियर इन द पेरेंट कंपोनेंट। So if you put it here, यहाँ पे if you keep that information, let's say name मेरे को यहाँ रख दूँ, if I keep that information here, then you can pass that as a property, यहाँ पे भी पास कर सकते हो,
यहाँ पे भी पास कर सकते हो। देन दोनों जगह पास हो गया, सेम प्रॉपर्टी, प्रॉब्लम सॉल्व। ओके, so two sibling components cannot share information among themselves, so you keep the information in parent component and pass it as a property, so they'll have the same information passed. हमने कल एक्चुअली यही किया था, राइट? कल एग्जाम्पल में एक्चुअल में हमने यही किया था, इफ यू रिमेम्बर ड्राइंग्स। इफ यू सी ओवर हियर, ये वाला किया था ना हमने। So my button, count. So kept it in the parent component and you're passing it. Right? So this are how informations can be passed in different ways. एक छोटा सा आर्टिकल है, राइट? ये डेटा शेयरिंग बिटवीन कंपोनेंट्स, आई थिंक आपने देखा होगा, बट अभी सिंस आई हैव एक्सप्लेन्ड इट, राइट, एक बार वापस सेशन के बाद चेक कर लेना। अभी एक दो लाइक लेट्स से एक बार एक्सप्लोर भी कर रही लो एग्जाम्पल ये, ओके? देन वी विल कंटिन्यू टुडे सेशन। ओके, तो मैं आपको एक 3 मिनट्स का टाइम देता हूँ, देन वी विल एक्सप्लोर फ्यू मोर थिंग्स टुडे। ओके, ऑल राइट, सो या 3 मिनट्स, 8:55 हो रहा है, 8:59 को वी विल मीट अगेन। ओके, the time starts now. Explore, and if you want to do it the exploration part after the session, I am completely fine with it also, but do explore, that's the only thing. Okay. All right. Yeah, you guys got any questions? All right. So yeah, let's continue. Uh, so how many of you guys have watched pre-class today? There was a pre-class video given. How many of you guys have watched pre-class video? What is it about? What was the topic there? It was pure functions and create reactor. You did not watch. Yes. All right. Okay, there was something about Axios. Okay, okay, we'll try to understand that also. But, huh. We have one more example here. I'll do one thing. I'll just copy some more templates here. Okay, थोड़े से और बना के रख लेता हूँ, so that I can explain I can give multiple examples. Example 5, example 6, example 7, example 8. All right, example 5. Let me just ठीक है, so we'll do this. Example 4 से we will start. Okay, so first topic, this can be discussed later on, but first, yeah, let's take this one. Okay. Rendering lists in React. What is list and keys? And
Let's try to understand that. Okay, यहाँ से we'll start. Okay, ठीक है. So let's take a simple example. Let's close all of this, and we have example 4. Let me show this here. So we have it here, and let's call this example 4. And वो भी दिख रहा है. And yeah, so it's working fine. ठीक है. So here, if I create one more component, okay, if I have to create one more component, मैं कुछ इस तरह लिखूंगा, right? क्या कहूँगा मैं? कुछ भी, whatever the component name is. Component name, let's say, is fruits list. Okay, तो कुछ फ्रूट्स है जिसका लिस्ट हम बना रहे हैं. ओके, तो लिख लेते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट. ऐसे लिखते हैं ना अनऑर्डर्ड लिस्ट HTML में. तो वी हैव आइटम्स, लिस्ट आइटम. ओके, फ्रूट का नाम लेट्स से एप्पल, मैंगो, बनाना, ऑरेंज, कीवी, yeah, pineapple. All right. So I'll render this list. Okay. Let's say it's just a fragment, and यहाँ पे आप वो component render करना चाहते हो, तो you will do fruits list, and you can see that items over there, right? Okay. तो इसका structure, I mean very basic. तो यहाँ पे if you open components tab, because हमने तो React tool install किया है, so I'll just close this for visibility purpose. And आप देख सकते हो, there's an app component. App component has fruits list component within it. So if you click on app or if you click on fruits list, you have some items being displayed. ठीक है. So it is what it is. Now if I click on inspect, अगर मैं inspect पे click करता हूँ, तो you can see that unordered list item है. li li li. ओके, तो ये तो बहुत बेसिक है. ऑल राइट, तो लेट्स सी व्हाट इज बीइंग एक्सप्लेन्ड ओवर हियर. ओके, इतना तो सबको समझ में आता है. ओके, रेंडरिंग लिस्ट और अरेज इज fundamental aspect, etc., etc. So what is it being covered? Okay, let's try to understand that. एक और ना will create one more function. Okay, vegetables list बना लेते हैं, बट इस बार हमारे पास वेजिटेबल्स इस तरह होंगे. ओके, पोटैटो, टोमेटो, कैबेज, अनियन, व्हाटएवर. ओके, वेजिटेबल्स इस तरह होंगे. तो इसको आई हैव टू रेंडर अनऑर्डर्ड लिस्ट. ओके, सो प्रोबेबली इनिशियली कुछ इस तरह करूंगा, वेर इन वेजिटेबल्स ऑफ 0, वेजिटेबल्स एट इंडेक्स 1, वेजिटेबल्स एट इंडेक्स 2, वेजिटेबल एट इंडेक्स 3, ऐसे लिख सकते हैं. एंड दैट गेट्स डिस्प्ले. वन सेकेंड. हाँ, एंड इफ आई शो दैट वेजिटेबल्स लिस्ट, वो भी दिखेगा. ठीक है. So list of vegetables are being displayed over here, which is another component. Okay, fine. Elements may you see one more unordered list, and that's being displayed. Okay, what is so special about it? Why are we discussing this? Okay. Now, whenever you have items listed like this, which is always the case, right? इफ यू थिंक अबाउट इट, हम तो बस एक बेसिक सा एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं.
बट डेटा आपको जब सर्वर से मिलता है, राइट, व्हाट डू यू डू, एज ए वेब डेवलपर आप क्या करोगे बेसिकली? जावास्क्रिप्ट में हमने देखा भी था क्या, सर्वर होता है, राइट, सर्वर होता है. सो यू हिट द सर्वर, server gives you back the data, correct? एंड यू यूज दैट डेटा, आप उसको फ्रंट एंड में डिस्प्ले करोगे एज अ फ्रंट एंड डेवलपर. आप यही यू काइंड ऑफ डू दिस थिंग्स, राइट? Server returns some data and you kind of display that data. The data that is returned is in JSON format. And if you basically shape it up, आप उसको proper format में करोगे, तो you generally speaking you get either object or arrays of object. Do you agree with me on this part? आपको जो रिस्पॉन्स मिलेगा जनरली, या तो ऑब्जेक्ट मिलेगा या तो अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे. आप वो यूज करके यू लिस्ट इट आउट, यू डू सर्टेन थिंग्स, राइट? ई कॉमर्स वेबसाइट, यू हिट, यू गेट द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, यू डिस्प्ले दोस प्रोडक्ट्स. प्रोडक्ट्स आएंगे आपको सर्वर से, आप वो प्रोडक्ट्स लिस्ट आउट करोगे. तो यू काइंड ऑफ यूज लिस्ट अ लॉट, यस और नो? लाइक अरेस बेसिकली, मीन लिस्ट ऑफ आइटम्स, सम लिस्ट ऑफ आइटम्स आएंगे, आप वो आइटम्स लेके डिस्प्ले करोगे, generally speaking. So here also, you are getting certain list of vegetables. And अगर आप ऐसे लिखोगे, तो you don't know the length of the array, right? So this is not very dynamic in nature. You don't know, vegetables can be 100 vegetables, it can be 50 vegetables, it can be 25 vegetables. So if you write a code this way, it's not a proper code. I think your code is very static and it's very constrained. तो हम इसको, if we use map function and do something like this, vegetables dot map, and you go through each of vegetable, right, each single vegetable, and you're creating li tags here. Each time you're creating a new li tag, and up wo vegetable, you kind of display it over there. The output is still the same, but now if I add one more item here, carrot, so you can see it's more dynamic in nature. आपको एक और इंडेक्स ऐड नहीं करना पड़ा. तो लेट्स से सर्वर पर जब आप हिट करोगे, सर्वर रिस्पॉन्स बैक विथ 100 वेजिटेबल्स, दिस 4 lines of code will satisfy that also. Are you getting my point? So that is why whenever lists are involved, you basically do this, right? You use map and you kind of create list items. This is a proper code whenever, especially arrays are involved. List, when I say list, arrays, whenever arrays are involved, you kind of use this code. Is that part clear? ये सब इतना क्लियर है ना? ऑल राइट, ठीक है. एक और चीज है, छोटी सी चीज, कीज करके एक होगा. वो क्या है, हम समझने की कोशिश करते हैं. ओके, नाउ अब आप कंसोल ओपन करो. ओके, इट्स नॉट डिस्प्लेइंग. If I open components tab, okay, let me open components tab. Okay, तो it's not showing this. हाँ ठीक है. Why is it not? एक एरर दिखाना चाहिए. I'm just looking for that. I'm just looking, why is it not showing that error? It could be because we not we're not following. ठीक है, no problem. It's fine. It's fine. So let's just open this.
Okay, एक सेकेंड, लेट मी जस्ट ओपन दिस। ठीक है, यहाँ पे सी देयर इज अ की आइटम डॉट आईडी। ठीक, ये समझना है अपने को। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट, बट इससे पहले एक सेकेंड। ठीक है, लेट्स डू वन थिंग। विल डिस्कस दैट की व्हेन वी नो मॉडिफाई आवर कोड। ओके, फ्यूचर में हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, तब करेंगे। इट विल मेक मोर सेंस नाउ। ओके, तब बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। बट फॉर द टाइम बीइंग, जस्ट रिमेंबर दैट मैप जब कभी भी आप यूज करोगे, ओके, यहाँ पे जैसे मैप यूज करोगे, तो आपको एक की एट्रीब्यूट ऐड करना होगा। okay, which will be very unique. And what is this key attribute? We'll discuss that in future, don't worry, अभी तो इतना important नहीं है। We'll discuss in tomorrow's session। Okay, it's just that there's a tool that we need to use to understand it better। अभी समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, but it will be a confusing। तो slowly slowly digest करते हैं instead of everything at once। but इतना part तो समझ में आ गया ना, why we're doing this। So this is how you can have a list of items। ठीक है, ऑल राइट। मैं एक टास्क दूंगा कि 5 मिनट दूंगा, थोड़ा सा इससे एडवांस दूंगा, एंड यू विल हैव टू डू। ओके, तो let's say I'll create that and I'll give, so let me just open a new notes, create a list of users। ओके, आपको एक डेटा देता, लेट मी राइट इट हियर, एंड उसके बाद मैं वहाँ चेंज कर लूँगा। दिस इज नॉट योर टास्क, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। मैं आपको अब भी देता हूँ टास्क। Okay, let's keep 3 users। Okay, let's take this। Your application should have a component called user which accepts the following properties। Okay, it should accept name, age, gender, email,
and image and display a user card. Number of user cards should be equal to obviously number of users. Okay, ऐप कंपोनेंट में 3 यूजर कार्ड दिखेंगे जिसमें ये डिटेल्स फिल करेंगे. ओके, is that part clear? This is what you have to do. Okay, your application should have a component called user. User नाम का एक component होगा जो which accepts the following properties, name, age वगैरह accept करेगा, and it creates a card. Card मतलब ये एक एक कार्ड हो गया ना. This one is a card, right? Each of these are a card. कार्ड. तो यहाँ पे यूजर का फोटो बताओगे, नेक्स्ट यूजर का इमेज नेम बताओगे, ऐसे. So we'll create 3 such cards. Is the question clear? Great. So yeah, your task is to do this. You have 9:25 tak will give. Okay, total 6 minutes. 9:19 now. 9:25 tak you'll have to complete this. Okay. Let me publish this and give you the link. Yeah, there you go. हाँ, आपको लिंक शेयर किया है. Do this task. I hope all of you guys have template code. If in case you don't, here is the template code. मैं ऐड कर देता हूँ वो भी यहाँ पे. Okay, don't start from scratch. Use this template code. Yeah, so it's added. I think you should be able to view it if you reload it. Template code भी share कर दिया. Okay, 5 minutes. 9:26 को we'll meet again. All right. We got 30 seconds, I guess, roughly. Okay, so did you guys complete it? Anyone? Aj, I'm looking if somebody is gonna share that GitHub link. आज करो. Do it now. Then you'll get a shout out. Easy problem तो कोई भी कर लेगा. All right. अच्छा, almost done. ठीक है. Take let's say 2 more minutes. Completed. Okay. 9:28 will start. Shum record. Yeah. Great. So the question says you have a list of users. Okay. So I have a list of users like this. Now my task is basically to create a component called user which accepts certain properties. Okay. Okay. So I'll take this and update it over here. Okay. So my application should have a component called user. I'll create a component called user. User will accept certain properties. Okay. तो क्या क्या properties accept करेगा? So you can even destructure directly and write down those properties. Name, age, gender, email, and it will return a user card. Okay. So here we'll have a p tag wherein we'll display name,
Similarly, oops, we'll have age display करेंगे, but how do we, हाँ, first of all we'll write it here, then अगर gender will display gender, will get email, email भी एक property है that we getting, right? So we'll open this up. Example 6. And here I'll put image source, put an image. Okay. Now here, similar to how we done users dot map, and up you will go through each of the user. Now instead of a li tag, you will return user like this. And here you will pass that entire user object each time. So when it is iterating through first item, index 0 पे जो item है जो iterate होगा, तो first time ये value pass होगा, second time ये value pass होगा, third time ये value pass होगा. But why do I not see anything? क्यों मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? To understand it, you need to properly understand how properties work, right? How props work. So इसको internally हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, right? User इन्वोक हो रहा है जिसमें यूजर नाम का एक की ऐड किया आपने, जिसका वैल्यू है यूजर ऑब्जेक्ट इटसेल्फ. ये एक ऑब्जेक्ट की तरह पास हो रहा है, राइट? यस और नो? अगर आप सोचे, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. तो यहाँ पे प्रॉप्स क्या आएंगे? यहाँ पे आपको प्रॉप आएगा की यूजर, वैल्यू यूजर. आप क्या डिस्ट्रक्चर कर रहे हो? आप डायरेक्टली डिस्ट्रक्चर करने की कोशिश कर रहे हो, तो इट वोंट वर्क. सो प्रॉप्स जो है एक ऑब्जेक्ट है जिसका की यूजर है, वैल्यू यूजर है. तो आप जब कंसोल लॉग करके चेक करोगे तो आपको वही दिखेगा. सो इफ यू कंसोल लॉग दिस प्रॉप्स, तो हाँ, फॉर द टाइम बीइंग लेट्स जस्ट रिमूव दिस. 2 सेकंड के लिए इसको रिमूव कर देते हैं. एंड लेट्स ओपन दिस. Okay, so what happened? I think I need to remove this and return user, or no, not even that. So you can see first time user and वो value pass हो रहा है, second user and that value, third time another user and the value is getting passed. इससे इजी अप्रोच ये है कि आप ये ओपन कर लो, आपको डायरेक्टली स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा. कंपोनेंट्स टैब अगर आप ओपन करोगे तो आप क्लियरली देख पाओगे कि यूजर वन में ये वाला यूजर फर्स्ट वाला जो कंपोनेंट है इसमें ये वाले प्रॉपर्टीज गए थे. की नेम यूजर है, वैल्यू एक ऑब्जेक्ट पास हो रहा है. सेकंड में भी सेम, की नेम यूजर है, वैल्यू एक ऑब्जेक्ट पास हो रहा है. की नेम यूजर है, वैल्यू एक ऑब्जेक्ट पास हो रहा है. सो ये these tools, helps a lot. React developer tool, इसीलिए ये Chrome extension I asked you to install. It helps you in the initial days. तो इसको डिस्ट्रक्चर करके हम प्रॉप्स को डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, करेक्ट? तो अगर मैं प्रॉप्स को डिस्ट्रक्चर करूंगा एंड उसमें से यूजर ऑब्जेक्ट निकाल लूंगा, देन इन द नेक्स्ट स्टेप मैं यूजर को भी डिस्ट्रक्चर कर सकता हूँ, राइट? एंड उसमें से आई कैन टेक आउट नेम, एज,
जेंडर, ईमेल, इमेज, ये सारे प्रॉपर्टीज उससे निकाल सकता हूँ, and then I can use it over here. Then I'll get to see all the things. देखो name भी आ गया. Oops. So you have user one का image, name, age, gender, email. अगर इसको कार्ड बनाना है तो you could style it a little bit and just say border 1 pixel, solid black, and put up padding of 20 pixel and a margin of 20 pixel. There you go. अगर image का width, if you want to reduce a little bit, past 200 width, and there you go. Now does it make sense what I'm trying to say? Or anybody has any questions? Okay, इतना समझ में आ गया? Does everyone get this part? Did everyone got this part? Perfect. All right. अभी थोड़ा और इसको एक्सटेंड करते हैं. Okay, थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं. जनरली रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में आप ये कांस्टेंट डेटा तो लाइक ये स्टैटिक डेटा तो नहीं रहेगा, करेक्ट? इट बी डायनामिक. यस और नो? ये डेटा जनरली आपको रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में, लाइक व्हेन यू मेक एन एक्चुअल एप्लीकेशन, ये सर्वर से आएगा डेटा. ये आप लोकली अपने सिस्टम में तो टाइप नहीं करोगे. ये डेटा सर्वर से आएगा, आप रेंडर करके दिखाओगे यूआई पे. तो अभी वो ही चीज कर देते हैं इंस्टेड ऑफ इट कीपिंग ओवर हियर. तो फर्स्ट थिंग, इसको कांस्टेंट हटा के, okay, थोड़ी देर के लिए एप्लीकेशन ब्रेक होगा, दैट्स फाइन. यहाँ पे इफ आई डू const react dot use state, and for the time being we'll just keep this. Okay, state की तरह अगर if you wanna keep, this is how you would keep users, set users, right? But still it's a static data, like I'm putting some basic data here. But समझ में तो आ रहा है ना? This is how you would write state in React. आप let const directly यूज नहीं करोगे वेरिएबल, rather you'll use react.useState, right? And if you use react.useState, this is how you would write, right? You put some initial data over here. अगर इसको आप अगर बाहर भी निकालना चाहते हो, you can actually put it outside also, like बाहर से like initial data करके यू कैन जनरली, आई मीन ये भी अलाउड है, ये बताना चाहता हूँ बस, कि आप ऐसे लिखे यू कैन हैव सम इनिशियल वैल्यू आउटसाइड एंड स्टार्ट इन दिस वे आल्सो, इनिट डेटा करके. इनिट बेसिकली मीन्स इनिशियल डेटा. ऐसे भी बता, लाइक यू कैन नेम वॉट एवर यू वांट, बट हाँ, ऐसे वेरिएबल आउटसाइड लिख के भी पीपल टेंड टू राइट इट. इज दिस पार्ट क्लियर? ओके, ग्रेट. तो हम नहीं रखते हैं ये, ओके, एम्प्टी ही रख देते हैं इसको. ओके, मेरे को ये डेटा चाहिए ही नहीं. मेरे को डेटा डायरेक्ट सर्वर से चाहिए. ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई वांट टू फेच द डेटा फ्रॉम सर्वर, नॉट फ्रॉम हियर. ठीक है. सो व्हाट आई डू इज, मैं यहाँ पे एक बटन ऐड कर देता हूँ जो वही काम करेगा, गेट डेटा फ्रॉम सर्वर. एक बटन है विच बेसिकली क्लिक करोगे तो ऑन क्लिक it basically fetch and
update data. I need to write that function, fetch and update data. जब आप ये बटन क्लिक करोगे, it will fetch the data, it will update the data. Okay. Now I'll just do a console log and just say fetching data from server dot dot dot. ठीक है, तो एक्चुअल में फेच नहीं कर रहा फॉर द टाइम बिंग. विल जस्ट सी वेदर दिस बटन वर्क्स और नॉट. तो हाँ, बटन अच्छी तरह से काम कर रहा है. जब कभी भी आप ये बटन क्लिक करोगे, इट विल गो फेच द डेटा फ्रॉम सर्वर इफ यू राइट द कोड. ओके. हाँ, इज दिस पार्ट क्लियर? इतना सा तो क्लियर है. अभी हमने डेटा फेच नहीं किया, बट इस तरह करने का इरादा है. whenever user clicks on the button, will fetch the data from the server, will display the data. Yeah. Okay. ठीक है. सो लेट्स डू दिस पार्ट. कंसोल लॉग करने की जगह हम वो एक्चुअल में फेच करते हैं डेटा को. ठीक है, कोई भी फेक डेटा ले लेते हैं. रेक्रेस डॉट इन करके एक वेबसाइट है. सो इसमें ना यू गेट अ लिस्ट ऑफ यूजर्स लाइक दिस. आप ये यूज कर सकते हो. या फिर देर इज अ वेबसाइट कॉल्ड जेसॉन प्लेस होल्डर. ओके, तो इसमें भी यू गेट यूजर्स या कुछ भी, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए. यू सी अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं यहाँ. सो यू गेट दिस basically whenever you hit slash users json placeholder. So you can use this information. So I'll do that same thing. Okay, इसमें इमेज नहीं है, but ठीक है, it's fine. We only need to understand how things work, right? तो इमेज का पार्ट अभी के लिए निकाल देते हैं. We not having image part. Okay, ठीक है. So how do I fetch the data? Okay, so I'll write something like uh, fetch, हाँ, json dot placeholder. ऐसे लिखेंगे ना, dot, then you'll write a function wherein you'll get this response and you will convert it into proper JavaScript friendly format. ऐसे करते हो dot then करके. And once you get that, then you basically use that data and let's just print it. Okay, हम देखते हैं पहले कि whether we got the data or not. Okay, so we are making a network request to this endpoint. We are getting the data and we are printing the data. Abhi we are not you know displaying it in the UI, but abhi basically whenever user clicks on this button, एक request जाएगा, server पे hit करेगा, कुछ response आएगा, हम वो response console में print कर रहे हैं. अरे, we are able to get that value. Yeah, value आ रहा है, right? We are able to get that user details here. तो क्या मैं instead of console logging, can I do set users and then if I do that, initialize हम empty array से कर रहे हैं. The moment we get back the data as a response from UI, from server से आपको एक response मिलेगा ना, then हम वो value जो empty array था उसको replace करेंगे actual value से. And if I do that, if you see this, यही चीज I'll open it here for better visibility. ठीक है, so let's open network tab. So you can see network में we were able to make a get request, we got this response which is correct. And components में if you see, so initially there was no user component at all, but जब server hit करके we got the data back,
you can see app has users, which is a list of users में you can see items getting populated. शुरू में empty था, then the items got populated, then 10 user components बन गए, and we are displaying that. तो वो एज एंड जेंडर की जगह कुछ और इंफॉर्मेशन फिल करना होगा, बिकॉज द डेटा इज अ लिटिल डिफरेंट हियर, राइट? यहाँ पे आई कैन गेट नेम, यूजर नेम एंड या नेम, यूजर नेम, ईमेल ले सकते हैं, एंड फोन नंबर, वेबसाइट ले सकते हैं. तो विल रिमूव जेंडर ऑल्सो बिकॉज इट्स नॉट अवेलेबल इन द डेटा. अगर कोई और एपीआई है वेर यू कैन यूज इट, बट हाँ, नाउ वी आर डिस्प्लेइंग थ्री थिंग्स. नेम, email, I wrote age. Age is also not there. So we have what? Name, username, email, address, phone, website. Okay. So instead of age, we'll just say name, username, then we'll just say username. Okay. So whatever, we just showing one example. So username ही दिखा लेते हैं. Then you get to see that username and email. But how you're getting the point? So this is how you can make a network request, get the data, and update your local state with that information. Does this make sense? Same चीज async await यूज करके भी लिख सकते हैं, राइट? सो यू कैन डू async फंक्शन, एंड क्या करोगे जनरली? async फंक्शन लिखोगे const init response await, and you will pass this. Remove this dot dents, and you will also have to use try catch block for this. कुछ एरर आएगा तो कंसोल लॉग एरर कर लेना. दिस गोज इन ट्राई ब्लॉक. ओके, इनिट रिस्पॉन्स को यू विल चेंज इट, राइट? तो फाइनल response is equal to, you get this, and whatever that response is, you will set it to final response, and you get the same thing. Response.json कर लिया, then you'll get the final response, and you're setting that final response to this user. 3 steps, again, simple as that. Is this part clear? Line 53 में, अच्छा, this one एक array है. You have a list of array जिसमें आपको ना यूजर नेम, यूजर का ईमेल ऐसे आ रहा है. देन सेकंड यूजर है जिसका नेम, यूजर नेम, ईमेल. देन थर्ड यूजर है जो भी है उसका नाम ABC, वॉट एवर इट इज. देन इस तरह लिस्ट ऑफ यूजर्स है. तो वी आर आइटरेटिंग, एंड फर्स्ट वाले को वी आर पासिंग, सेकेंड वाला इंडेक्स 1 में जो आएगा वी पास इट इन द नेक्स्ट आइटरेशन, एंड सो ऑन. उस तरह जितने नंबर ऑफ लेंथ ऑफ अरे जितना होगा उतने नंबर ऑफ यूजर्स आएंगे. इज दैट पार्ट क्लियर? अभी आप वही यूजर जो आ रहा है, whatever user that's coming in, right? When you are iterating through, you are passing as a property. ऐसे लिख सकते हो, and there are multiple ways, but हाँ, एक एक टाइम पे एक एक ही करते हैं. Okay. This is async await way of doing things. If you are not comfortable with it, use dot then dot catch. But async await में you do it this way. Await करके you wait for this response to come back, and once you get it, do you do that res.json,
and once you do that, you get the final response. This is not related to React, I guess. This is basically JavaScript code, nothing different than that. Okay, एक और लाइब्रेरी है कॉल्ड एक्सियोस, ओके, जिसके बारे में आपने इसमें देखा था प्री क्लास में। ओके, तो ये लाइब्रेरी बेसिकली नो ऑल्टरनेटिव है फेच के लिए। इंस्टेड ऑफ फेच यू कैन यूज दिस एक्सियोस लाइब्रेरी एज वेल। तो इसको अगर आप यूज करोगे तो ये जैसे हमने रिएक्ट के स्क्रिप्ट्स लिए थे, उसी तरह ये स्क्रिप्ट लेना होगा आपको, कॉपी कर लेना, एंड यहाँ पे रिएक्ट के स्क्रिप्ट्स के बाद ये भी ऐड कर देना। एंड उसके बाद बेसिकली यू कैन मेक रिक्वेस्ट। एपीआई कैसे काम करता है, इस तरह काम करता है। अगर आपको गेट रिक्वेस्ट करना है तो आपको मेथड गेट एंड जो भी यूआरएल है वो आपको पास करना होगा। तो लाइक इसका ऑल्टरनेट अवेट एक्सियोस एंड लेट्स से फेच की तरह हम लोग एक्सियोस पास करेंगे अभी। ये अवेट एक्सियोस एंड यहाँ पे मेथड मेथड गेट यूआरएल, बेसिकली जो भी यूआरएल है you'll pass that. The URL here is JSON placeholder slash users, तो वो पास कर दिया। एंड इसमें you don't need like if you see console.log of init response देखते हैं। So when I click on this, आपको डेटा डायरेक्टली मिल जाएगा। You don't need to do res.json डेटा करके। Okay, this is how you get the response in Axios. Syntax है बस थोड़ा सा different, but understand it. Axios कभी भी it returns an object जिसमें आपको डेटा नाम का एक की मिलेगा, जिसमें आपके वैल्यूज मिल जाएंगे। तो init response डॉट डेटा करोगे तो आपको फाइनल रिस्पॉन्स मिल जाएगा। सो दैट ओके, डेटा नाम की एक की में आपका रिस्पॉन्स छुपा हुआ होगा, तो अगर आप निकाल लोगे तो यू कैन सेट यूजर्स टू फाइनल रिस्पॉन्स एंड इट वर्क्स द सेम वे। ये एक लाइब्रेरी है फेच, जैसे आप फेच बेसिकली अलाउज यू टू फेच द डेटा। Axios is one more library which fetches the data. That's it, nothing else. और कुछ है नहीं इसमें समझने के लिए। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह है एंड इट डज द सेम थिंग। जब जो भी फेच करता है इट डज द सेम थिंग बेसिकली। मेथड में यू विल राइट गेट मेथड है, पोस्ट मेथड है, पैच मेथड है, या पुट मेथड है, या डिलीट मेथड है। तो यू मेंशन व्हाट मेथड इट इज, यूआरएल में कहाँ से आपको विच एंड पॉइंट यू नीड टू हिट, यू विल राइट, दैट्स इट। दो वैल्यूज पास करोगे एंड यू गेट द सेम रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में आपको डेटा नाम का की यू विल हैव टू गेट दैट। तो या दैट्स व्हाट Axios is. If you see last portion, let's यहाँ पे if you see the last one, Axios library to make network request, वो JSON placeholder यूज करके they will doing the same thing. Okay, तो सेशन के बाद आप ये भी ट्राई करना, इट विल बी वेरी इजी। लाइक इंस्टेड ऑफ यूजिंग जेसॉन प्लेस होल्डर, वहाँ पे उन्होंने जेसॉन सर्वर यूज कर लिया है, बस दैट्स इट। आप वो भी कर सकते हो लोकली, जेसॉन सर्वर हिट करके यू कैन डू दैट। ओके, नाउ एक ही लास्ट पार्ट बचे थे विच इज फॉर्म्स इन रिएक्ट बेसिकली। ओके, एंड ये भी हमने एक्चुअली थोड़ा बहुत कवर कर रखा है, तो बहुत इजीली वी कैन अंडरस्टैंड दिस एज वेल। ओके, फॉर्म्स तो आपको पता है, एवरीवन नोज व्हाट फॉर्म इज, राइट? गूगल फॉर्म्स क्या करता है, डेटा कोलेट करता है यूजर के पास, राइट? तो उस तरह अगर आप भी अपने वेबसाइट में यू वांट टू क्रिएट अ फॉर्म, हाउ डू यू क्रिएट अ फॉर्म, स्पेशली व्हेन इट्स अ रिएक्ट कंपोनेंट। ओके, बस यही समझना है, एजेंडा इसका यही है, फॉर्म्स इन रिएक्ट का।
अगर आपको रिएक्ट में भी फॉर्म्स इम्प्लीमेंट करने हैं तो किस तरह करेंगे. ओके, दैट्स ऑल, दैट्स व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड. तो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो लेट्स सी. यहाँ पे विल क्रिएट react डॉट यूज स्टेट. यहाँ पे कुछ तो इंफॉर्मेशन वे ले लेते हैं. जैसे यूजर नेम और नेम. वेरी सिंपल, सेट नेम. ओके, इनिशियली एम्प्टी रख दिया. एंड यहाँ पे हम लोग एक फॉर्म क्रिएट करेंगे. फॉर्म जैसे आप लिखते हो HTML में, उसी तरह फॉर्म लिख दिया. ओके, एंड यू राइट इनपुट. and input में you put controlled components, right? So we kind of discuss that value. And you pass name. On change, whoops, on change, you'll say handle change, and you'll write handle change here, function handle change, जिसमें आपको event मिल जाएगा. तो event dot target dot value, you'll put that. एक placeholder. Oops, I can open it with live server. And यहाँ पे I can even put label to this. अगर label रख दिया, I'll put a name, add an input, and there you go. ये थोड़ा सा space देना है, तो I'll put this and we'll create a space, and there you go. And name, if I want to show, this is our value and name. And ठीक है, if I open this, I have this state empty. And let's say if I type in something, name Batman, and you can see state is getting updated. Now when I submit this form, okay, so I'll add some information. I'll say input type equal to submit and value equal to submit form. तो एक फॉर्म का बटन क्रिएट हो जाएगा which will update the value. There are mosquitoes here. हाँ, तो when I click on this button, जब मैं ये बटन पे क्लिक करूंगा, form gets submitted. So whenever form gets submitted, we call on submit event. Okay, on submit handle submit करके बना लेंगे. जैसे handle change बनाया था एक event handler, I'll create something called handle submit for form event. जब कभी भी form submit होगा, right, handle submit gets called. And you know, जब कभी भी ये submit होगा, I want to form submitted, तो I can do whatever I want to do with form data now. Okay, फिलहाल के लिए we'll just write this. On submit, handle submit call होगा, and basically form जब submit होता है, you send that information to server so that the that input from user is updated in the server. That's why you generally submit, right? जब कभी भी आप फॉर्म सबमिट करते हो तो आपका डेटा लेके सर्वर में फीड किया जाता है. और कुछ भी कर सकते हैं, बट हाँ, दैट्स व्हाट इट इज, राइट? तो दैट्स इट. ओके, जब कभी भी यूजर ये इनपुट पे क्लिक करेगा, हैंडल सबमिट कॉल होगा, एंड दिस बेसिकली सबमिट्स द फॉर्म. एक छोटा सा प्रॉब्लम है, विल सी दैट. हम पहले चेक कर लेते हैं, विल चेक वेदर वी गेट दिस इन कंसोल लॉग और नॉट. ओके, हम ना थोड़ा बड़ा वाला विंडो यूज कर लेते हैं. विल यूज दिस विंडो. जस्ट गिव मी अ सेकंड.
I know someone turned off the AC, I guess. Okay, so here we'll use this. And if I submit, I should see this form submitted करके console log में. But something weird happened. एक सेकंड के लिए हमको वो दिखाई दिया कंसोल में, but then it got vanished. And if you see here, index.html question mark करके आ गया. Let's do it again. Okay. All right. There is no question mark or anything here. URL में I'll just write Bruce, submit, and it's gone. Prevent default. Yes, exactly. So we did not do prevent default. JavaScript में भी हुआ करता था, right? So we do e.prevent default, और इसको event b लिख सकते हो. There's no problem with that. And when you do, that's when it will work properly. So when I say Bruce submit form, and you can see form can be getting, you're submitting the form. Now you can do whatever you want with the form data now. That's it. You know how to create a form. Okay? तो इसको handle name change बुला लेते हैं थोड़ी देर के लिए. Let's say I have other things also. जैसे कि age हो गया. Okay? React dot use state and age pass करना है यहाँ पे. Okay? Initially I'll not put any age, maybe null. And here I want to add that also. Okay? एक और ऐड कर दिया, लेबल एज करके, इनपुट वैल्यू इक्वल टू एज. ऑन चेंज ना हम लोग हैंडल नेम चेंज नहीं, हैंडल एज चेंज कॉल करेंगे. ओके, जो कि क्रिएटेड नहीं है तो एरर आएगा. तो हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे हैंडल एज चेंज. ओके, एंड सेट एज ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करके इसका हैंडलर हो गया. एवरीबडी विथ मी ऑन दिस. एक और वैल्यू क्रिएट कर लिया एज करके. ठीक है, एक और ऐड कर लेते हैं. क्या, I'll call it country. Set country react dot use state. Initially इसको empty रख देता हूँ. And this time label, and यहाँ पे will add country. Okay, तो अभी input नहीं यूज करूंगा. I'll use select tag. Everybody know what a select tag is, right? All right. So यहाँ पे we'll have options. First one, select country, which is empty. I'll just keep it empty. And first one, India, China, USA. So we'll keep 3 countries. Okay. And यहाँ पे value equal to, I'll put it as country. On change, I'll put it as handle country change. But ऐसा कोई function है नहीं, मेरे को create करना होगा. So I'll create handle country change. Okay, set country event dot target dot value. इनिशियली एम्प्टी रखेंगे, जब कभी यूजर सिलेक्ट करेगा तो विल अपडेट इट. ठीक है, एक और चीज ऐड कर देते हैं. विल ऐड वन लास्ट थिंग. इज द यूजर मैरिड? okay, we'll also maintain this state react dot use state. maybe by default false रख लेते हैं. this time
we'll have one more label, and let's say is user married. Okay, and in here we'll put input. We'll say type equal to checkbox. Okay, now जब कभी भी चेक बॉक्स यूज होगा ना, टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स और रेडियो, तब आप checked attribute यूज करते हैं. You do not use value, you'll use checked attribute which will give you the proper true or false value. Okay, now इसको आप सेट करोगे is married. On change you will say handle is married change. ओके, ऐसा कोई फंक्शन क्रिएट नहीं किया हमने, तो विल क्रिएट हैंडल इज मैरिड चेंज, ऐसा नाम का एक फंक्शन बना लिया. ओके, देन आई विल से सेट इज मैरिड इक्वल टू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू नहीं लिख रहा, सी आई विल राइट चेक द एट्रीब्यूट, बिकॉज वो चेक बॉक्स है, इट्स अ चेक बॉक्स. तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं यूज करते, चेक द एट्रीब्यूट यूज करते हैं. ठीक है, चार वैल्यूज. नेम, जो ये इनपुट बॉक्स से वी आर यू नो मैनिपुलेटिंग. देयर इज एज विच इज अगेन वन मोर we using to manipulate, we use input box to change the value of age. We use select tag to change the country. We use one checkbox to manage is married status, and when a user clicks on submit, the value gets submitted. And instead of console logging this, I'll say form data equal to सारा डेटा यहाँ पे will collate. Okay, say name, age, country, is married, सारा डेटा will collate here, and we'll just say console.log of data. I'll just show that data. Okay, is this part clear? अभी we will try it out. Okay, तो 5 वैल्यूज हैं हमारे पास. नेम, कंपोनेंट्स ओपन कर लेते हैं फर्स्ट टाइम. Okay, whenever I update the value of name, Batman, see the value is getting updated. एज में जब चेंज करूंगा 12, 28, तो इट्स गेटिंग अपडेटेड. बट एक चीज आपने ऑब्जर्व की होगी, इट्स अ स्ट्रिंग, बट मेरे को क्या चाहिए एज, आई वांट इट इन नंबर, आई डोंट वांट इट इन स्ट्रिंग. तो कैन आई डू टाइप इक्वल टू नंबर हियर? Okay, you'll again observe something weird. Now again let's see, Bruce, तो ये अपडेट हो गया. Even though I updated it as number, you see this is still being displayed in the form of string. अभी भी वो string की तरह ही दिखाई देता है. तो even though you change the type to number, the only thing it does is it just gives you this. No, you can increase or decrease the value. The input box type changes to this. If you actually want to convert the data type to number, here handle age change पे when you're going, right, e dot target dot value आ रहा है, right, new age equal to, इसको नंबर की तरह कन्वर्ट कर दो, number of e dot target dot value, and pass that new age value. और आप वो डायरेक्टली भी लिख सकते हो, सेम थिंग. तो यू आर कन्वर्टिंग इट into a number and then passing that value. अभी ट्राई करते हैं. Batman, age is 28. You see it's gone, it's a number now, right? एक और क्या है, इट्स अ कंट्री, ये वाला जो हमने ऐड किया. तो वैल्यू हमने इसको इक्वेट किया कंट्री को
which is initially empty, तो ये initially select country बताता रहेगा. बट जब आप चेंज करोगे तो वी आर कॉलिंग अ फंक्शन कॉल्ड हैंडल कंट्री चेंज विच अपडेट्स द वैल्यू. वैल्यू यहाँ पे है, राइट, इंडिया, चाइना, यूएसए. तो अगर आप इंडिया सेलेक्ट करोगे तो वैल्यू गेट्स अपडेटेड टू इंडिया, चाइना एंड यूएसए. तो यू सी, इफ आई सेलेक्ट इंडिया, द कंट्री दैट गॉट अपडेटेड इज इंडिया. If I select China, it's China. If I select USA, it's USA. The fourth one is a checkbox. Checked value is set to is married, which is initially false. अगर मैं इसको true रखता तो you can see checked value already true बता रहा है. मैंने इसको false रखा, so initially the value is false. So when you are calling this, is married change is getting called. What does it do? It basically updates the value to whatever the checked attribute is. इसीलिए now if I do Batman, see the first name value is getting updated. If I update age, age is getting updated. If I select country, country gets updated. If I select this, see your checked attribute is getting updated. Different kinds of inputs, and we were able to handle all kinds of inputs. Now when I click, अगर आप input type submit रखोगे तो जब बटन क्लिक करोगे तो फॉर्म सबमिट होगा. Whenever form submits, handle submit gets called. We are preventing the default behavior of form and we are just printing the data. So when I click on this, what do you see? You're getting this, you are printing that same data. Now ये data का आप कुछ भी कर सकते हो. You can send it to server, you can, validate it, you can do X, Y, Z. But this is what a form submission is. Did everyone get this part? सबको ये पार्ट समझ में आ गया? The example is there in the notes. You can definitely check out after session. But हाँ, इतना ही है. But इसको थोड़ा सा refactor कर सकते हैं. Okay, वो क्या है? We'll check out. You see, handle name change, handle age change, handle country change. इतने सारे values, इतने सारे functions. एक फॉर्म स्टेट के लिए उसकी जगह थोड़ा सा रीफैक्टर करके अगर मैं एक ही फॉर्म स्टेट करके वैल्यू बना लेता, सेट फॉर्म स्टेट करके, इफ आई हैड क्रिएटेड रिएक्ट डॉट यूज स्टेट जिसमें एक ऑब्जेक्ट रख लेता, एंड इफ आई हैड रोट नेम इक्वल टू एम्प्टी, एज इक्वल टू नल इनिशियली, कंट्री एम्प्टी, इज मैरिड फॉल्स, तो मेरे को ये चार वैल्यूज लिखने की जरूरत नहीं होती. तो आई कैन जस्ट रिमूव दिस. थोड़े से अपडेट्स करने होंगे, तब तक द कोड विल ब्रेक, बट ठीक है. So instead of maintaining 4 different values, I can maintain one object and put all those values. Abhi, here you're updating name, age, country, and is married. But now it is form state dot name, right? It's form state dot age. Value is form state dot country. Checked is form state dot is married. Things start working again. Is this part clear? हमने 4 डिफरेंट डेटा टाइप्स क्रिएट कर 4 वैल्यूज की जगह वी जस्ट क्रिएटेड वन ऑब्जेक्ट इन विच वी रोट दिस. उसी तरह 4 फंक्शंस है हमारे, नेम, एज, कंट्री चेंज एंड इज मैरिड चेंज. इसको भी हम रीफैक्टर कर सकते हैं. ओके, तो बेसिकली इंस्टेड ऑफ 4 फंक्शंस आई विल क्रिएट वन फंक्शन कॉल्ड हैंडल चेंज जो कि अपना इवेंट लेगा. Okay, and इससे I can get some values, right? So if I do e dot target, okay, and instead of these 4,
अभी चारों को थोड़ी देर के लिए रिमूव कर देता हूँ। हर जगह हैंडल नेम चेंज की जगह आई पास हैंडल चेंज, हैंडल चेंज, हैंडल चेंज, हैंडल चेंज। ओके, वी नॉट अपडेटेड इट बट हाँ, चार जगह डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन की जगह वी जस्ट हैव वन इवेंट हैंडलर कॉल्ड हैंडल चेंज। ओके, जब कभी भी हैंडल चेंज गेट्स कॉल्ड वी विल बी एबल टू सी ई डॉट टारगेट। तो नाउ लेट्स रीलोड दिस। अगर मैं इनपुट फर्स्ट इनपुट बॉक्स पे क्लिक करूं तो दिस इज द इवेंट ई डॉट टारगेट। For this is the e dot target, which is correct. For this is the e dot target, which is this country. ये वाला input. So if I click this, e dot target is this checkbox. हमारे पास event dot target है, तो we can utilize it, right? E dot target, which is this input box, dot value करूंगा तो मैं value आ जाएगा, right? But how do I make sure that the name also gets updated? Okay, I'll tell you what happens. So अगर मैं e dot target dot value लिखने लगूं, ओके, ठीक है, e dot target तो समझ में आ गया, e dot target dot value लिखूंगा तो वैल्यू इज, वो वैल्यू आ जाएगा। ऐसे मैंने इनपुट बॉक्स पे क्लिक किया तो इनपुट बॉक्स का वो वैल्यू आ गया, एज पे क्लिक किया तो एज का वैल्यू आ गया, कंट्री पे क्लिक किया तो कंट्री का वैल्यू भी आ गया, चेक बॉक्स पे क्लिक किया तो चेक बॉक्स का ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू विच इज ऑन ऑफ आ रहा है। ठीक है, विल फिक्स दैट, बट वैल्यूज आ रहे हैं। नाउ ये वैल्यू जो आएगा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, मेरे को ये इस पे मैप भी तो करना है, राइट? नेम की जगह वो नेम अपडेट होना चाहिए, एज की जगह एज अपडेट होना चाहिए, कंट्री की जगह कंट्री, इज मैरिड की जगह इज मैरिड अपडेट होना चाहिए। तो मैं इसको आइडेंटिफाई कर सकता हूँ या तो आईडी यूज करके या तो नेम एट्रीब्यूट यूज करके। यहाँ पे अगर मैं ये इनपुट बॉक्स को एक नाम रख दूं कि नेम के लिए यूजर आ रहे, तो इसको नेम करके ही रख देता हूँ। इसका नाम मैं एज करके रख देता हूँ ये इनपुट बॉक्स का, ताकि मैं आइडेंटिफाई कर सकूं किसका वैल्यू क्या है। ये सिलेक्ट बॉक्स का नाम ना मैं कंट्री करके रख देता हूँ बेसिकली। यहाँ पे जो की नेम्स है वो इनपुट बॉक्स के भी सेम नेम्स रख रहा हूँ। आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा वाई इज दैट द केस। ठीक है, यहाँ पे इज मैरिड रख रहा हूँ नेम। ठीक है, नाउ हियर इफ आई डू नेम e dot target dot name is e dot target dot name, okay, event dot target dot value वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, नाउ सी e डॉट टारगेट डॉट नेम, ए अगर मैंने लिखा तो ए आ जाएगा, e डॉट टारगेट डॉट नेम H12 मैप हो जाएगा। फॉर द थर्ड वन अगर मैं चेक बॉक्स क्लिक करूंगा तो कंट्री इंडिया दोनों मैप हो जाएंगे। उसी तरह अगर मैं चेक बॉक्स क्लिक करूंगा तो ऑन ऑफ आ रहा है, मुझे ये ऑन ऑफ नहीं चाहिए, राइट? ई डॉट टारगेट डॉट चेक्ड एट्रीब्यूट लेना होगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं कि ई डॉट टारगेट डॉट चेक्ड करूंगा तो ई डॉट टारगेट डॉट चेक्ड आ जाएगा, राइट? तो नाउ अगर मैं ये क्लिक करूं तो वो ट्रू और फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, तो मैं ये यूटिलाइज कर लूंगा एंड आई टेक आउट दीज वैल्यूज के ई डॉट टारगेट से। अगर मैं इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम निकाल लिया, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इवेंट डॉट टारगेट डॉट चेक्ड एट्रीब्यूट निकाल दिया मैंने, आई एम टेकिंग आउट दोज थ्री वैल्यूज एंड
I'll do something like this. I'll say set form state. फॉर्म स्टेट एक ऑब्जेक्ट है जिसमें सारे प्रीवियस वैल्यू ऑफ फॉर्म स्टेट रहेंगे एंड हियर फॉर द टाइम बिंग अगर इफ यू आर कंफर्टेबल विथ ई डॉट टारगेट डॉट नेम वो भी लिख सकते हो तो हियर आई विल जस्ट से ई डॉट टारगेट डॉट नेम ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू स्प्रेड ऑपरेटर यूज किया मैंने ओके मैं बोल रहा हूं कि वेन एवर हैंडल चेंज जब कभी भी हैंडल चेंज कॉल होगा जैसे कि ये इनपुट या ए इनपुट या ए वाला सिलेक्ट बॉक्स या ये वाला चेक बॉक्स पे जब कोई भी यूजर कुछ करेगा तो हैंडल चेंज जब कभी भी कॉल होगा तो हम हर बार बेसिकली व्हाट डू वी डू इज वी विल बेसिकली क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट ओके यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है ईच टाइम सो यू कैन इवन राइट इट लाइक दिस updated form state value equal to every time you are creating a new object wherein you will pass the previous form state value and then update this and यहाँ पे you could just write this you could just say updated form state value so हर बार you are creating a new object you're passing the previous value of form state and then you are passing e.target.name as a key, e.target.name value as a value. If you do not know what this box value is, like why do I keep it in box? अगर कोई variable है, okay, some variable, let's say ये variable age है. Now you want to put this age as a key, but in the form of a variable. Let's say object, you are creating some object ओके जिसका वैल्यू 30 है बट हियर you do not want to use direct string or anything but you want to pass a variable here like this you can even do that and now if you see object में the sum variable gets replaced by the actual value तो अगर आपको कीज में ऑब्जेक्ट के कीज में if you want to put a variable you put curly braces sorry you put a square bracket like this so that's a javascript concept so you basically put some square bracket like this if you put a square bracket you can basically put any variable here now the variable that we are putting is e.target.name so kya hoga basically let's say I start writing no I start updating this form name yeah I'll explain with one example so on change gets called handle change. Handle change basically calls this function handle change. So you are spreading the previous values of form. तो ये values जो भी हैं यहाँ पे spread हो जाएंगे. Gets no spread over here. ठीक है. Then what happens? Okay. Then you're saying e.target.name. So since we are working on this e.target.name is name. So I'll just write that name and value would be whatever user inputs in this okay value would be वो जो भी user input करेगा अगर user ने b लिख दिया तो it replaces the previous value right if you have the same key in object it replaces the previous value अगर user ने उसके बाद a ऐड किया तो it replaces that value b t m a n so it replaces the previous value and this becomes your updated form state अगर user ने age change किया तो you have this as a previous state right form state अगर spread कर दिया and then you're adding a new value age is equal to 24 so what happens the previous value goes away this becomes your updated form and the cycle continues okay so it's fine you have a session at 10:30 I saw the message ठीक है 2-4 मिनट और रुक जाओ that's fine
उसके बाद आइए, I think he is in this meet also, so he'll wait. Okay, he'll give you some lenience, but it's important, so let's just quickly cover this. But is this part clear? तो उस तरह you can update the form state value, and this value becomes your updated state each time. एक प्रॉब्लम है बेसिकली, बिकॉज अगर टाइप चेक बॉक्स है तो थोड़े कंडीशंस है, राइट? सो इफ इट इज नेम इट वर्क्स, बट इफ इट इज एज यू हैव टू पुट नंबर ऑफ ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो वो कैसे करोगे? You will write a condition here. You will write some kind of a condition here. So you can even use, e dot target dot, if the name, or if the target type, if it is equal to number, if that is the case, then basically आप नंबर ऐड कर लोगे टर्नरी ऑपरेटर करके। यू कैन मैनेज दैट इंफॉर्मेशन। यू सेइंग कि इफ टारगेट टाइप इज नंबर, तो कन्वर्ट इट इनटू अ नंबर, अदरवाइज कीप इट एज इट इज। ओके, तो दिस गेट सॉल्व। नेम एंड एज का, कंट्री का इट्स ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, नॉट अ प्रॉब्लम। बट इफ इट इज मैरिड, which is a checkbox, so you have to put e dot target dot checked. So you can add even one more ternary operator here and just say, instead of e dot target dot value, you'll check again if e dot target dot type, if it is equal to checkbox, then basically e dot target dot checked likhoge, and then it's a value. If you're confused with this, you don't have to actually do this. You can use if else conditions to manage this, but logic is something you can define on your own. ये मेरा logic is, it doesn't mean that you'll have to write the same logic, but understanding this should do. Okay, so yeah, I mean, try it out. Next session में फिर वापस will discuss this, but it's an interesting thing. Just check this out. All right. So this is just plain logic, JavaScript logic. It has got nothing to do with React. Okay. इसको आप अगर if else condition में भी लिखना चाहे तो लिख सकते हो कि अगर if e dot target dot type equal to check box, then क्या कर सकते हो? You can write it in if else conditions. Same thing. I mean, try it out. Only then you'll get it. I don't expect that you'll understand it by just looking at it. That's not what I expect. I expect that when my session is done, you'll actually try it out. You'll actually go here. The entire code is there over here. You'll explore it. That's what I assume. When you come to tomorrow's session, I want you to do that exact same thing, and then we will discuss more. Okay. So yeah, I see some one or two comments saying, "Okay, you're confused." Try it out. Okay, code it out, then you'll get resolved. You're not superhuman being that that you'll get it just by looking at it or watching it. It's not a Netflix series. It's coding. You get it when you code it. So yeah, code it out. Tomorrow, even after coding it out, if you have some queries, I'll answer. But first you have to code it out. Yeah, that applies to you, सौरभ as well. हाँ, ठीक है। एक बार ट्राई करना, यहाँ पे एग्जाम्पल है, ट्राई करना। अगर फिर भी समझ में ना आए, देन वी विल टॉक। ओके, sounds fair? Great. So yeah, see you in tomorrow's session. Thank you so much. Bye bye.